और रिसर्च में भी ये देखा गया है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। क्या रे कशिश बड़वे, 12 हफ्तों में ठीक से जांड का बाल नहीं उगते रे, ठीक से पूरी दाढ़ी नहीं आती और तू बाड़ी बनाने की सलाह दे रहे हो। Gaslighting 14 to 15-year-old lads in the name of biomechanics, sports science and PubMed research papers by pencil neck biomechanic gurus is lately the new frickin' trend. For real guys, it takes around a frickin' decade to build a good physique. And here, Mr. Kashish Gutka is yapping, citing a 12-week study telling that this frickin' trick, this frickin' maneuver, this frickin' cue can help you grow your frickin' triceps by 1000%. आप अपने ट्राइसेप्स को लेंथ एंड पोजीशन में ट्रेन करते हो तो आपको ज्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ಯಾವ ಗಂಡು ಮಾರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಓದು, ಆಮೇಲೆ ನೀ ಬಾಡಿ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಹೋಗೋ ರಾವ್ ಸಾಹಿಬ, ಕಾಲ್ಯಾಗ ಲೋಕಾಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ರೇ. ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅ ಬಿಟ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ cuff straps, bands, seat belts, yada yada yada. I think Kashish should accept Shebang Lift's offline challenge and go to Delhi to challenge him in a freaking offline workout, because that might tell actually who is better in a freaking practical setup. Rather read PubMed studies and tell that okay, this freaking thing is right and this freaking thing is wrong, because practical always beats theory in the modern frickin' world. And also, if you take the historical anecdotes, the bros were always stronger than the hoes. I mean, science-based lifters. Okay, now it's time to end my frickin' rant. I hope this message sinks in, and until then, peace out. देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते